geometry in 2 dimensional. Okay, तो तार formula को थिले में and last formula को थिले कौन दे distance between 2 points. यदि मन को दुटा पॉइंट दिया जाए ताले तार हमें distance की बात करें हमें डिस्कस करते हैं. ठीक है. ओके, आज भी किसी हमें formula डिस्कस करेंगे. ओके, लेट्स सी. एरिया ऑफ द ट्रायंगल त्रिभुज क्षेत्रफल. ओके, तो देखो पिलाने एटा गोटे ए बी सी गोटे ट्रायंगल देछि तार वर्टिसेस माने ए बी सी आडा वर्टिसेस माने कोन पिलाने शीर्षबिंदु. वर्टेक्स माने शीर्षबिंदु. वर्टेक्स माने सिंगुलर थी बोले सिंगल पॉइंट थी बोले वर्टेक्स को आजो और जे अधिक थाए प्लुरल फॉर्म थाए ता हमें वर्टिसेस कहउछि. ओके, तो वर्टिसेस माने शीर्षबिंदु. A point, B point, C point दिया है. A point दिया वाला x1 y1, B point दिया वाला x2 y2, C point दिया वाला x3 y3. Okay, so how to find the area of the triangle ABC? Okay, यदि मन करो कौन कहला area of the triangle ABC with vertices at A of x1 y1, B of x2 y2, C of x3 y3, then area of the triangle ABC equals to half into x1 into y2 minus y3 plus x2 into y3 minus y1 plus x3 into y1 minus y2, which is the formula for finding the area of the triangle ABC. त्रिभुज रो क्षेत्रफल आने का फॉर्मूला होता है कौन जे दिस मच. ओके, मतलब पिलाने बेटा फॉर्मूला. ओके, तो कोलिन ऑफ 3 पॉइंट्स कोलिन में कोन से जदि मन करो तीनटा पॉइंट गोटे लाइन पर थाए ताले हम बुझे कोन जे मन करो ए बी सी कोलिन माने तीनटा पॉइंट कोन जे गोटे लाइन पर अवस्थित तेनु तांको वाला कोन जे कोलिन ऑफ 3 पॉइंट्स. ओके, मन करो a of x1 y1, b of x2 y2, c of x3 y3. 3 points will be collinear if this equal to 0. यदि मन को
एटा जदि इक्वल टू 0 हो जाए ताले बुझा कोन प्लान दे आर कोलिनियर ओके सो व्हिच इज द कोलिनियर कंडीशन ठीक अछि कोलिनियर बुझिला ओके ओके जी हम एग्जांपल्स करेंगे देखो okay देखो बोला so a given a point a vertices b vertices c vertices are given okay but we have to find out area of the triangle okay हमें त्रिभुज ର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ଆଣିବା okay just ମୁଁ କଣ କହିଥିଲି area of the triangle formula କଣ କହିଥିଲି half into x1 into y2 minus y3 plus x2 into y3 minus y1 plus x3 into y1 minus y2 which is the formula for finding the area of the triangle ABC okay એટલે हम देखा कौन देखो किन प्लान है देखो given लिखवा given a of 1 2 b of 3 4 and c of half comma 1 by 4 be the vertices of triangle ABC okay which is the vertices which is given three vertices A B C A of 1 2 1 2 B of 3 4 and C of half 1 by 4 okay तो किन फाइंड करेगा तुम देखो तो पहले आपको बुझा पड़ता x1 y1 बुझा हमें x2 y2 बुझा हमें and x3 y ठीक है जी x1 y1 x2 y2 x3 y हम जानले समतल मूल्य जान ले तो एक फॉर्मूला में पहुंच गए एरिया ऑफ द ट्रायंगल ABC इक्वल टू हाफ इनटू फॉर्मूला कौन x1 into y2 minus y3 plus x2 into y3 minus y1 plus x3 into y1 minus y2 ओके तो कौन मिला है हाफ इनटू देखो x1 कितना x1 1 y2 कितने y2 4 minus y3 कितने 1 by 4 plus x2 कितने लाना है x2 3 y3 1 by 4 minus y1 2 plus x3 1 by 2 y1 2 y2 4 ओके तो सॉल्व करो अपन 1 by 2 हां सॉल्व कर दिया हमने कौन 4 कौन है 16 minus 1 15 plus 3 into 4 कौन होगा 1 minus 6 minus 7 okay plus 1 by 2 2 minus 4 minus 2 okay तो कौन प्लान है 1 by 2 और एलसीएम बार करना है और एलसीएम बार करना कौन देखो 15 minus 21 and 2 2 is 4 2 into 2 minus 4 okay so 15 minus 4 minus 15 minus 21 minus 6 minus 4 minus 10 तो कौन होगा half into minus 10 by 4 5 इधर minus 5 by 2 okay area equals to 5 by 2 area of the triangle is equal to more okay so कौन है area also positive so minus कौन है plus 5 by 2 okay which is the area of the triangle ABC clear है okay बुझला so ये प्रोसीजर हमारे बात करें कौन है area of the triangle clear okay next please
देखो ओके पिला देखो a रो पॉइंट गिवन -7 3 and b रो पॉइंट गिवन 8 4 से कहते you have to find out midpoint coordinate of the midpoint okay midpoint आने ठीक है तो how to find midpoint to find the midpoint you have to remember that the midpoint formula is x1 plus x2 by 2 y1 plus y2 by 2 which is the midpoint formula ठीक है देखो पहले गिवन लिख दो मैं गिवन a of -7, 3 and b of 8, -4 be the 2 points okay then the coordinate of the midpoint x1 plus x2 by 2 y1 plus y2 by 2 so p coordinate तो हमरो x1 y1 को याकू x2 y2 okay so x1 plus x2 by 2 -7 plus 8 by 2 and 3 4 by 2 okay so p -7 plus 8 1 by 2 3 4 -1 by 2 which is the coordinate of the midpoint p clear okay that clear so which is the midpoint for finding the midpoint of the 2 points given 2 points clear okay and please okay so given points 3 4 -2 1 and to find the distance between 2 points okay माने distance हम आने पड़े okay तो distance हम जान चलो माने given 2 पर लेंगे हमें given 2 points a of how much 3 4 and b of how much -2 1 okay the distance between 2 points okay a b equals to what about root over x2 minus x2 1 x1 minus x1 whole square plus y2 minus 1 the whole square root over x2 और x1 y1 ले जाओ को x2 y2 ले जाओ तो कौन हो -2 -3 -2 -3 whole square plus y2 minus y1 1 minus 4 whole square okay तो कौन हो बेटा -5 25 plus 1 minus 4 minus 3 square 9 equal to root over 34 which is the required distance between 2 points okay बुझेला पिलाने तो which is the distance between 2 points okay next okay let's see so find the coordinate point P which divides A of this B of this in the ratio 2:3 okay माने P point टा कोन जे AB को 2:3 डिवाइड करछे so we have to find out the coordinate of P रो coordinate आनिबा को हेबो बुझेला
যদি p পয়েন্টটা ab को 2:3 ডিভাইড করছি তাহলে p র পয়েন্ট আমি কিন্তু বাহার করব ওকে লেটস সি দেখো p পয়েন্ট ডিভাইড ab इंटरनली ओके इंटरनल फॉर्मूला पाइ दिला और एक्सटर्नल फॉर्मूला पाइ दिला सो इंटरनल p जेहेतु ab ର ভিতর ଅଛି আমি কয়া কোন যে p ডিভাইড इंटरनली टू इन रेशियो 2:3 ओके एग्जांपल ये p be the point which divide AB A how much power of 6 and B of minus 3,1 okay minus 3,1 in the ratio 2:3 internally okay internally clear ठीक है so then so coordinate of p मतलब mx2 plus mx1 by m plus m my2 plus ny1 by m plus m okay so p m हां डेफिनेटली मैंने f में x1 y1 भागबा आपको x2 y2 भागबा ठीक अछि तो x1 y1 x2 y2 पुट कर देबो कोन হবে ml2 nl3 पुट कर दे कोन होगा 2 into x2 minus 3 n कितना पिला है 3 into x1 कितना पिला है 4 by m plus 1 2 plus 3 m कितना पिला है 2 y2 कितने 1 n कितने 3 y1 कितना बड़ा 6 by 2 plus 3 ठीक है तो कोन होबे 2 3 is 6 minus 6 plus 3 4 is 12 by 5 2 plus 6 3 is 18 by 5 तो कौन होगा 12 minus 6 by 5 20 by 5 4 okay which is the coordinate of p बुझे लगता है okay so এটা লাগবে internal division formula पूरा क्लियर है okay एपरे एक्सटर्नल जो p बाहर से बोले तमे एक्सटर्नल फॉर्मूला पकई तमे तारो कोऑर्डिनेट मान बेले ओके एक्सटर्नल फॉर्मूला कोन हमरो mx2 minus nx1 by m minus n my2 minus ny1 by m minus n okay which is the external division formula okay तो किछि का करले किछि फॉर्मूलास करले तार एग्जांपल से तो तुमको क्लियर है बुझे देली ठीक अछि नेक्स्ट क्लास पर मिशन कर दे अब किछि फॉर्मूलास एंड एग्जांपल से तुमको मिसला ठीक अछि थैंक यू